There are a lot of people when they go through a breakup, they leave their basic necessity. These people can't do much. There has to be someone else who comes in their life and tell you need this, you need that. Girl is a working girl, but the mindset is for the guy to not let her work. You should have a clear communication that don't assume things. If somebody is dwelling over an issue, how to get out of it. If something is happening in our life, firstly it was meant to be. But isn't that manipulation? It could be, but we say it channelization. There are people who are revengeful as partners. Firstly, I would say every partner is like that. There comes a point they are like, किसने ऐसा किया था? I will do it. Welcome to Dopamine High. Thank you. How are you feeling today? I'm feeling very good. Can you please introduce yourself for our audience? I'm Shivanshu. I'm a life coach by profession, and I have a business of coating bitumen. I'm also a IRDA license holder, so I have a firm, Goel Financial Services, which helps you in financial planning. That's all. I've also written a book. I'm an author also, and its name is Quite the Chaos. It's a book on women overthinking. Okay. Wow. So can you tell a little bit about your book and why have you named it Quite the Chaos? Little something about my book is that my book focuses on generally on women overthinking, and this is because of the fact that usually the question rises that the girls and the guys have a different concept of overthinking, and it's scientifically also proven. And there's a normal tendency of women to overthink a little More. a little. So it came from that only, that there was a time in my life when there were two women who were very important to me. And suddenly at the time of happiness also, there was a lot of overthinking. And it was that point when I was doing my life coach degree as well. So I thought of writing a book because I just found out that no one knew that even in happiness also overthinking was there. So that was the main concept from where I initiated writing the book and completed it. The main focus inside this is that the different why overthinking happens. So our brain does not actually recognize pictures. It only recognizes the vibrations. So when we are happy, so there's a certain kind of vibration that is produced inside the brain. And if the same vibration matches with some other vibration which have happened earlier, so let's say we are talking and I'm, let's say, happy talking to you right now, which I am, and let's say it produces a 3-unit vibration. And there was a time, let's say I was talking to a girl in college which generated the same vibration. So now if I sit quietly, I will see my brain automatically moving here and there, and all those thoughts of 3 vibrations coming in front of me. So if I'm happy about that, then it won't be considered overthinking. If I'm not, and I keep on fighting, कि यार फिर से वो याद आ रही है, ये है, वो है, it becomes overthinking. So this book helps you with that kind of overthinking, wherein the major focus is that it will tell you a loop, how you enter into the overthinking, and the loop continues again and again, and how you can come out of that loop. That people get stuck and they start dwelling. Yes, the problem is they get stuck and the circle gets completed. And the book will help them to not complete the circle, but in fact come out of it. Okay. So can you explain how to go about it? Like if somebody is dwelling over an issue, how to get out of it? One of the thing is we have to start making ourselves in a way that we stop judging things. If something is happening in our life, firstly, it was meant to happen. And if it has happened, we can just calm down and wait for some time. Right. So if say someone have said some harsh thing to me, और मैं immediately अगर उसको respond कर दूं, तो would be a fight. Yes. तो उसने मुझे harsh कहा, let's say उसने मुझे कहा कि तू मोटा है. अब ये नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट है, तो मोटे बोलो यार तेरे बाप का थोड़ी ना खाता हूँ. हाँ, right. एक तो ये immediate response है. Other way around, if I keep quiet, I wait for some time and I see myself, यार सही बात तो कर रहा है. हाँ यार मोटा तो हूँ.
But still, if let's say I want to respond that person, मैं ये भी तो कर सकता हूँ यार, मोटा हूँ, तू ही रास्ता बता दे. So there are so many channels to it. Perception. हाँ, but मैंने जज कर लिया कि ये मेरे को बुरा फील करवा रहा है, ये मेरे को हर्ट करना चाह रहा है. वो मेरे अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड था कि कोई भी इंसान जो मुझे बोलेगा वो मुझे हर्ट करने के लिए बोलेगा. बट फॉर अ मोमेंट लेट्स से आई विजुअलाइज दिस कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो भगवान है या मेरे फादर हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तू मोटा है. क्या मैं ऐसा रिस्पॉन्स दूंगा कभी? सो वो जो सिंपल सिंपैथी है या एम्पैथी कह लो या कंपैशन कह लो, वो हम लोग बहुत लैक कर चुके हैं. एंड इनफैक्ट लैक करने के बाद ना देयर आर पीरियड्स आल्सो, जैसे आई एम अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, बट देयर माइट बी अ मोमेंट दैट माय डे वाज नॉट गुड, और उस मोमेंट पे आके मुझे कोई बोलता है तू मोटा है, सो मेरा Because भी you बात can है, never be 100. you can never be the only moment that is 100 is death. So जब भी कुछ ऐसा होता है we should, I think the best part is कि कोई कुछ तुम्हें बोलता है, just don't reply that time, keep it inside you. But sometimes what happens is कि आप अंदर दबाते रहते हो and you're hurting yourself, which can turn into a physical problem or maybe cause you anxiety. How to deal with such a situation? See, thoughts तो बहुत सारे rise होंगे. It is considered that everyday basis we get 10 lakhs of thoughts on everyday basis. Just imagine Sasha sitting in a room and talking about 10 lakh topics. So the thoughts will come. We should let them flow. Let's say जिसने वो मुझे मोटा बोला था, बार बार आएगा, उसने मुझे बोला. I need not answer that right now. वो दिमाग में चल रहा है. There are other things also going. I'm moving, I'm doing my work, I'm eating my food. I should start focusing on eating my food and talking to my friends, doing my normal work, and decide on कि यार okay, I will answer to it, but not right now because currently I'm overwhelmed. Yes. My body is not in my control. So जब आप उस थॉट्स को फ्लो करने दोगे ना, यू विल सी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो थॉट वीकन होते जाएगा. Yes, that's what I meant to say. That if somebody has suppressed their emotion, how do you come out of it? I think if someone has suppressed their emotions, firstly, easier way is to seek help, because it is very difficult for you to come out of it because you thought it was right to suppress it. That is why you have suppressed it. It is only going to be someone else who is going to tell you that this was not right. जैसे बचपन में when we go to school and things happen, we tell our parents, especially for a guy like me, I used to tell my mom. So when I tell my mom, she tells me, okay, this you should keep, this you should fight, this you should do that. You need help. That can be a friend. The best thing a person can have is going to different persons and talking about it. And more than women, men are suffering from this right now because we don't talk. Yes. ठीक है. गर्ल्स इस चीज में बहुत अच्छी हैं, Expressive. एक्सप्रेसिव होती हैं, दे आर मोर इमोशनल इंटेलिजेंट, दे स्पीक टू वेरियस पीपल एंड दे कैन स्पीक टू एनीवन अबाउट देयर इमोशंस. दैट इज देयर पावर. ऑल्दो पावर का जब थोड़ा यूज होता है तो वही ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है. बट बॉयज ये बहुत ज्यादा लैक करते हैं. दे आर लाइक कि अगर मैं किसी को बता दूं यार ये बाहर चले जाएगी बात, नो वन हैज दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इफ आई एम हर्ट अबाउट समथिंग, it's not crucial to tell the whole story to Sasha. This is happening to me. I can indirectly also tell Sasha, and Sasha also can directly or indirectly give me an answer to that. I think that is sufficient to come out of those emotions. But of course, if someone is having a bigger disease like cancer or something, it is mostly a part of suppressed emotion. You should seek help through a psychologist, through a life coach, through your spiritual journey. And there are many more other ways, but it will be difficult on the first step to find out yourself what happened. There was this girl, okay, and she was in the field of becoming a doctor, but now she was currently, let's name her something. I will not tell the exact name, but let's name her Shikha. Okay, so there's this girl Shikha whose parents were doctor and had a hospital, and very successful doctor. This is actually one of my clients. So when she came to 11th class, she wanted to decide what her career could be. So she tried finding out various ways to go into, let's say, I will become a businessman, I will become a pilot or something. But it was always a keen interest to become a doctor only. But उस टाइम में माइंड में होता ना यार मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं क्या हटके कर लूंगी, सारे बोलेंगे कि यार पेरेंट्स भी वही सेम हैं तो मैं भी डॉक्टर बन गई, तो ये पेरेंट्स की देन है, मेरी नहीं.
She tried, she suffered, she took commerce first in 11th, then she took non-med. But eventually, towards the end of 11th class, she took medicals. So now, after 12th, she became a doctor. She entered into, not exactly doctor, she started her doctor studies. वो कॉलेज में गई, कॉलेज में जाकर वो डॉक्टर बनी, शी मेड फ्रेंड्स एंड ऑल. एंड फ्रेंड्स के बाद शी फाउंड आउट कि यार मैंने डॉक्टर ही बनना था. बट स्टिल शी वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड कि यार शी वाज फाइटिंग विद द इमोशन कि यार मैं डॉक्टर तो बन जाऊंगी, पर सारे यही कहेंगे कि माँ बाप की बदौलत बनी है. सो दैट क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट वुमन, वो उसके अंदर नहीं आ रहा था. So what was happening was, she, whenever this used to happen, this suppressed emotion जो जागता था, she had a symptom that she used, her shoulder, the right shoulder actually started doing like this. Oh, okay. Normally, whenever talking to any person, any guy, so अब वो किसी ने पहचाना नहीं, मतलब no one was able to identify it, but when I was taking her sessions, I was able to identify that. Many a times when you see a person is simple, very disciplined, and we try to find out various trends, what is happening inside their mind. So I found out that she was doing like this. And when I asked her, why are you doing this? She's like, yeah, I have cervical. Why? Because jab bhi, she was doing like this, the first time when it initiated was that she had a pain over here. And it is probably, I'm talking, her age is about 20 to 23. She's in her master's right now. So, talking about suppressed emotion, whenever a symptom starts, it has already been 5 to 10 years. So, it is so deep. It's stored in your body. It's stored inside your body, and then only that symptom comes out. So, when I identified that symptom, and the second part is you can never tell that client that this is your symptom. You have to start treating them, and धीरे धीरे जब वो उस चीज से बाहर निकलते हैं, तो वो सिम्टम खुद ही ठीक हो जाता है, एंड देन ओनली यू कैन टेल देम दिस इज योर सिम्टम. सो विद हर इट वाज दैट उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम जो निकल के आई वाज शी हैड सच अ गुड पेरेंट्स हु टोल्ड हर टू डिसाइड व्हाट टू डू इन हर लाइफ. सो इतना फ्री हैंड मिलना became a problem for that girl because she wanted somebody to guide. yes, कि तो ये कर ले. एंड उनका माइंडसेट वैसा था कि अगर वो करने जाती, शी वुड हैव बीन परफेक्ट इन दैट, बट वो डीप इनसाइड माइंड में था कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया. एंड ऑन द अदर वे अराउंड, अगर हम किसी को भी देख ले जिस बच्चे को इंजीनियरिंग करनी पड़ी जबरदस्ती क्योंकि फादर IITian थे, उसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव? टू हैव अ पेरेंट्स लाइक दैट. तो वो उसके अंदर था. द सप्रेस्ड इमोशन वाज दैट, नॉट कि मैं डॉक्टर बन गई, नॉट मैं इंडिपेंडेंट वुमन नहीं. So that was the suppressed emotion, which took me almost 2 months to identify exactly, and took her to accept it almost 6 months even after that. But with different, by talking again and again, we tried to find out various grounds जिसके through वो थोड़ा बहुत suppress होना शुरू हुआ. I never told her that she is not having cervical. I had to go with that you are having cervical, go to her, but that was not a cervical problem at all. That was just that. So the moment वो emotion correct होता गया, it was told to her somehow, she introspected herself that she had the best parents in the world. धीरे धीरे ठीक होने लगी. So you spoke about psychology and then you spoke about life coach. So what's the difference between a life coach and a psychologist? So psychologists are the doctors who actually go through a very rigorous process. Like I think it takes them after 12th almost 5 to 7 years to become a psychologist, and they're able to cater all sorts of psychological disorders. Talking about life coach is that field which, firstly, you become a life coach after all your phobias are cleared. Secondly, most of the time it is considered that you have a logical mindset. Thirdly, you ought to have your life experiences also to teach someone else. So let's say if I'm talking to Sasha and she has a relationship problem. So let's say she is married and she has a marriage concern. So till the time it is a topic of a girl or a guy, I can tell her. If I'm not married. But if it's actually a problem of a relationship, I won't be able to help her because I have not personally experienced that in my life.
but a psychologist can. Because they've studied it. They have studied it very deeply. They have their thesis and research and everything. So many times what happens is a psychologist, any client you give a psychologist can take them to 0 to probably 90. Mm-hmm. But to a life coach, many times it happens that the person will come at a level of 0 and I can take them to 30, or I might tell them to go to a psychologist or follow the path of spirituality or follow the path of other ways around. But then why? Why a life coach and not a psychologist? Our procedure is a little bit faster. It's a little bit faster. And what do you mean by it's a little bit faster? I think to a psychologist, you have to visit weekly basis, and you just talk and they will take out things from inside from you. Okay. We have our different modalities which we can immediately apply and treat that trauma in a span of 1 hour or 2 hours. It cannot happen with psychology. For that, if let's say you are suffering, let's take that same example of that shoulder thing. So firstly, she didn't know what was happening. So there are modalities in which I go to the subconscious mind. We try to implant that in their subconscious mind. Sometimes even without them knowing. But isn't that manipulation in a way? It could be, but we say it channelization, direction given. So जिसने मुझे मोटा कहा, मैं बोलूँगा, and let's say someone tells that girl मोटा and she comes to me as a client and tells me कि उसने मेरे को मोटा कहा. One way is कि जाए उसको मार. Other way is यार he was right. Next is let's talk about next week. What is hurting you? उसने मोटा कहा या बचपन में किसी ने कहा था? मतलब और वो पुअर था, उसने मोटा कहा इसलिए चुभा, कोई अमीर कहता तो नहीं चुभता. So there are so many modalities. A psychologist will listen to that guy or girl, सुनते जाएंगे और उन्हीं को directions देंगे. A life coach will select out of those 7, try to see the body language और उसको बताएंगे कि ये वाला पकड़ना है. They will खुद से लेके कि ये ट्राई करेंगे पहले, फिर ये ट्राई करेंगे, फिर ये ट्राई करेंगे. I think this is one of the finest difference between them. तो रिलेशनशिप में भी आजकल यही हो रहा है. People are getting bored from one person, they are just switching on to another, which is not the way to lead life, because you need to, if you want to marry someone, you need to be loyal, give the basic bare minimum to the person. अगर आप ऐसे switch करते रहोगे, then there is no stability in your life, there is no discipline in your life. So how do you go about with such people who just want to switch from one person to another? Firstly, in life में हम किसी भी फील्ड में चल जाए ना, हम एक बेसिक डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं. जैसे व्हेन वी बिकम लाइफ कोच, तो हमें अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, क्लाइंट को लेना, हमें कहा जाता है उनसे डिस्क्लेमर लो, एक फॉर्म साइन करवाओ, एंड आप कभी भी पर्सनल नहीं होगे उनसे. जो उनकी फीलिंग्स है वो एक रूम में आएगी और चले जाएगी. Then if let's say that's a young girl, you should try that the door is open or there's someone nearby, or you have to tell them if you want to bring some family member, you can. So वैसे ही जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, if I talk about marriage, there are certain rules जो हमारा कल्चर, बीइंग अ हिंदू, मेरा कल्चर डिसाइड करता है कि यार शी इज द ओनली वन. तो ये सेकेंडली दैट आपकी प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग इज नाउ यूएस टुगेदर. ये जो 5 चीजें हैं ना, इनको जो भी 4-5 वो 7 फेरे या 9 वचन, एक तो वो आपको अपने माइंड में वाइब करने ही करने हैं. यू कांट क्वेश्चन देम. हमारा माइंडसेट बड़ा क्वेश्चनिंग है. मैं क्यों मानूं? मुस्लिम्स में ऐसा होता है या बाहर ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड्स होती हैं, यू कैन लिव इन. तो आप जिस भी कल्चर में हो, इन इंडिया भी आजकल डिफरेंट तरह के कल्चर्स है. हिंदू में भी फर्दर बड़ी सारी डाइवर्सिफिकेशन होती है, बट फ्रॉम वेयर आई कम, हमारे में वो चीजें मानी जाती है. फर्स्टली वो अब माननी है तो एक कंस्ट्रेंट हो गया दैट दिस इज योर रूम, अब जो करना है इसके अंदर करना है. अब आप 2 ही जाने हो. हर रोज अगर हम दाल खाते हैं तो कहते हैं ना वो दाल बोर हो जाती है, बाहर का बटर चिकन अच्छा लगता है, बट यार दाल में मसाला भी तो डिफरेंट डल सकते हैं. Ranveer Kapoor has said, no, I want dal chawal for life. And before Shadi, it was like, I want to explore. Moving on, we are
living in this century where cheating is very common and bare minimum has become, you know, the cherry on the top. So, how do you deal with a person who is a cheater? Because it said once a cheater, always a cheater. Should you give chance to that person? See, if I talk as a life coach, we need to first find out that why is he a cheater. So let's say if Sasha is about to get married to a guy, and जब भी हम स्पेशली इन हिंदू एंड इन इंडिया जब भी आपकी शादी होगी तो लड़के से पहले घर देखा जाता है. हु आर द पेरेंट्स, हाउ आर दे एंड एवरीथिंग. जस्ट गिविंग यू एन इंस्टेंस, लेट्स से द पेरेंट्स पूरी मार्केट को पता है वर नॉट गुड एंड दे हैड समथिंग बैड इन देयर लाइफ. सो लड़का तो उनको ही वॉच करते आ रहा है. सो देयर इज अ हाई टेंडेंसी that there's a root it cause could to be that because when the guy's parents or the girl's parents were the guy's parents, because I'm talking about your marriage, वो fighting, वो लड़का वही देख रहा था. and अगर वो फादर बच के चले गए तो वो लड़का फिर वो देख रहा था. so he thinks कि यार in life I can also do that. this is first. second, अब फादर मदर से फाइट कर रहे थे एंड जो फादर थे was right and the girl was wrong. And it's a proven sign that girls are more emotional intelligent. They can actually play around with guys very easily. So अब इस लड़के को पता है इस लड़की ने तो मेरे साथ खेलना, but I don't have that power to fight so much. It is always easy to get a new one. Second point. Third point, वो लड़का बहुत ज़्यादा बुलेट था. ये सारे टॉपिक्स है ही नहीं. वो बचपन से बुलेट था, उसको सबने बुली किया है. तो ये है, तो वैसा है, तेरे फादर ऐसे, फलाना तुझे नहीं मिलेगा. Let's say his father was a chief minister of them or prime minister of India. अब वो बुलेट है, उसको कुछ नहीं मिलेगा. एंड द वाइफ इज डूइंग द सेम थिंग कि फादर को देखना तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, तो क्या है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. नाउ दिस गाय गेट्स अ गाय, दिस बॉय गेट्स अ गर्ल. यार तेरे फादर की अपनी लाइफ है, तेरी अपनी लाइफ है. तू फादर ने जितने पैसे कमाए हैं उसी को अच्छे से लगा रहा है. यू आर द बेस्ट पर्सन. नाउ टेल मी हाउ कैन ही गो बैक टू हिज वाइफ. इवन इफ ही गोज बैक टू हिज वाइफ, क्या वो उसका है. तो अब ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस देन फाइन. जब हमारी फैमिली में हम शरीका भी कहते हैं, जब मैरिज होती है तो ये देखा जाता है पेरेंट्स कैसे. सबसे पहले पेरेंट्स देखा जाता है, बिकॉज मानना है कि 70% to 90% जो भी है वो मदर या फादर से आया होगा. इफ दे वर गुड, देयर आर हाई चांसेस दैट दिस गाय इज गोइंग टू बी गुड. सो ये जो चीटिंग का हो रहा है, आई डोंट नो ये जो भी टॉपिक्स है उन लड़कों के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसको किसी ने बताया है कि ये करना आसान है, अच्छा है, सब कुछ, तभी वो कर रहा है. नहीं तो वो क्यों एक नई लड़की पे ज्यादा पैसे खर्चेगा जहाँ पे एक जगह पे ऑलरेडी खर्च दिया है. इट इज ऑलवेज इजी टू गेट एवरी रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड. लड़की घर के लिए एज अ हाउसवाइफ चाहिए, फिजिकल नीड्स है, कुछ भी है, इट इज ऑलवेज इजी विद द गर्ल यू आर. वो क्यों जाना जाएगा किसी नए इंसान से मिलने के लिए व्हेन इनफैक्ट we both first met? Is it easy to talk to each other? आपने वो एक मूवी देखी है आज, it recently came, Metro इन दिनों, Yes, I've seen it. where the father and the mother are also cheating, the kids Yes. are also on every level somebody is doing Yes, something yes. which is so. How can we get rid of this and why is it becoming so common? सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं, बाकी चीजों को छोड़ दो, हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं. Both sitting in a room on their mobiles. Now imagine your own life. आप जब कैफे में जाते हो किसी फ्रेंड के साथ, कितनों के हाथों में मोबाइल है. प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर. हम मोबाइल पे हैं, तुम्हारी बीवी भी मोबाइल पे है, एवरीथिंग इज इन मोबाइल. आई विल से आई लव यू टू माय वाइफ इन माय मोबाइल. एनीथिंग आई वांट टू डू विल बी माय मोबाइल. सो वहां से शुरू होता है. जब वो मोबाइल पे थे, एक दूसरे को देखा भी नहीं, कोई टॉपिक पे बात ही नहीं की. सो व्हाट वी से दिस इज अवेयरनेस नहीं थी, हम प्रेजेंट में नहीं थे. मैं और साशा बैठे हैं, हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं. मेरा दिमाग कहीं नहीं जा रहा होगा मेरे ऑफिस में क्या क्लाइंट कौन है, आपका भी नहीं जा रहा होगा कल क्या करना है. ये जो कॉन्शियस है ना, ये हमारी शिफ्ट हो चुकी है टोटली. हम पास्ट और फ्यूचर में हैं. जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में करेंगे, प्रेजेंट में वेज निकालेंगे. अब आफ्टर अ पॉइंट हमारे भी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तो हम निकालेंगे अच्छा लेट्स गो देयर, लेट्स डू दिस. तो उस तरीके से वो स्पार्क आएगा एंड देन इट विल गेट गोइंग. अगर हम दोनों के केस की बात करें,
उन दोनों में स्पार्क था ही नहीं, वो अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते थे, लेट्स से वो इंस्टा करते थे। एक वो हाउसवाइफ थी एंड ही वाज अ वर्किंग पर्सन। उसको किसी दिन उसने किसी को मैसेज किया, आगे से रिप्लाई आ गया लड़की का, तो उसके अंदर वो वेवलेंथ जगी विच इज लेट्स से ऑफ 2 यूनिट, जो बचपन में थी, जो उसको खुशी देती थी, एंड ही वाज डिमांडिंग दैट खुशी बिकॉज जो उसकी नेगेटिविटी की वेवलेंथ थी वो 10 पे है। तो यहाँ से 2 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ही वांट्स टू कम एट 5 टू सर्वाइव हिज। तो उसने उससे बात की, उसको खुशी मिली, एंड यू सी जब उसने उससे बात की तो वो नॉर्मली घर में भी बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा था। तो अगर वो सेम वेवलेंथ उसकी वाइफ प्रोवाइड कर दे समहाउ, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नाउ इफ यू से कि वो कैसे प्रोवाइड करेगी, वो टॉपिक लेके आ सकते हैं ना। लेट्स कीप फर्स्टली शी शुड फाइंड इन हरसेल्फ कि वो क्या गलत कर रही है, जो एक हम नेचुरल रेजिम बोलते हैं। तो मोबाइल पे यार, यू नॉट टॉकिंग, यू नॉट कुकिंग फूड योरसेल्फ फॉर योर हस्बैंड। अगर हम पुरानी बात करें, हमारे फादर को हमारी मदर के हाथ का खाना पसंद था, ठीक है। आज उल्टा हो गया, हम भी बॉयज नहीं चाहते कि हमारी वाइफ किचन में जाए, कुछ जाए। बट अगेन वो हम पैदा तो अपने पेरेंट्स से ही हुए हैं ना। दैट्स देयर समथिंग इनसाइड ना कि यार आज मैंने ये बनाया है या आज मैंने ऐसा कुछ किया है। तो वो एफर्ट्स अगर नहीं डालेंगे ना, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों डेविएट होंगे। देन देयर आर अदर पोजीशंस आल्सो। लड़कों को जरूरी नहीं है बचपन से लड़कियों को गिफ्ट देना आता हो, ठीक है। सो कितने सारे लोग जो स्कूल में पढ़ाई के लाइन में होते हैं, देयर आर नॉट मच पीपल हु कैन मेक गर्लफ्रेंड्स। जिसने गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई, वो वाइफ को रोज लाके कैसे देगा? उसको कैसे पता कि वाइफ अगर ना भी बोल रही है तो उसमें हाँ है? ये टीचिंग उसको कहाँ से मिलेगी? उसने आज तक अबाउट सेक्स अपने फादर से बात भी नहीं की। ही इवन डिडंट नो हाउ टू डू इट। गूगल पे गया, उसके फ्रेंड्स ने बताया, डिफरेंट साइट्स देखी, वहां से सीखा। वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, इट वाज द राइट प्लेस ऑफ डूइंग इट और रॉन्ग, ही डजंट नो। जब उसको पता ही नहीं है, वो कैसे करेगा? एंड लेट्स से बाय चांस ही हैव सीन दैट वीडियो जिसमें यही दिखाया गया है कि एक मूवी देख ली उसने जिसमें वाइफ घर पे रहती है एंड वाइफ इज ओनली मेंट फॉर दिस थिंग, और उसके माइंड में तो इमेज ही वो बन रखी है। हु विल चेंज इट? हु कैन चेंज इट? और बाय चांस वो वाइफ भी वही निकली कि उसने भी वो मूवी देखी कि वाइफ का काम ही ये होता है, उसकी मदर भी वैसी थी। But अगर contradictory चीज हो that a girl is a working girl, but the mindset is for the guy to not let her work. So what to do in this situation? Communication. The biggest thing for marriage, I would say, since I am married now, is communication. You should have a clear communication that, see, don't assume things. For example, if I have said you are looking, your hairs are looking very good, and मैंने 1 साल से वो मैं आपको कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, बट बाय चांस यू आर टेकिंग इट इन अ टॉन्टेड वे, योर डे वाज बैड या आपका अपना कोई ट्रॉमा था, डोंट एज्यूम इट, कम बैक टू मी, शिवांशु तुमने मेरे को गुड तो कहा था, बट ट्रूली गुड वाला था या टॉन्ट वाला था? सो धीरे धीरे हमारी कम्युनिकेशन ओपन होगी, नहीं यार आई एक्चुअली मेंट दैट, मैं रॉन्ग नहीं था, तो आपको भरोसा होगा उसकी बातों पे। So I read this story which is about a narcissistic king. What happens is that king, he's so self-obsessed, वो बस अपने बारे में सोचता रहता है, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं, it's just मैं ही मैं। And while he's doing this every day, and one day what happens is वो पॉन्ड में देख रहा होता है, अपने आप को देख रहा होता है कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, and he falls into the pond and he dies. So a person who is narcissist, how firstly you will realize कि आप narcissist हो, and if somebody is narcissist, how can that person come out of this or like get better at this phase? ये जो आपने स्टोरी बताई ना, इन लाइफ कोच एज वेल एज इन साइकोलॉजी, इसका एक टर्म है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग टॉपिक स्टिल बीइंग रिसर्च्ड एंड नो कंक्लूजन्स ड्रॉन सो फार। इसको कहते हैं एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दल बदलू भी होता है, he is very, like let's say if I am an NPD, I'm speaking like this, and after let's say 5 minutes I will be very, like I will be shouting. So it's like वो एक वक्त मैं किंग था, एकदम से मैं क्वीन भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, and I don't even realize it.
फर्स्टली द क्वेश्चन arises, ये एनपीडी डिसऑर्डर आता कैसे है? हम इसको हेरिडिटी नहीं कह सकते, बट संगति जरूर कह सकते हैं। संगति के थ्रू हेरिडिटी हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ इसको। लेट्स से माय फादर वाज वेरी aggressive. मैं फादर के पीछे नहीं जाता, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। इफ समवन्स फादर इज वेरी एग्रेसिव, उनको बहुत पैसा कमाना है, यूजुअली जो भी पैसा कमाना चाहता है इज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन या व्हाटएवर वी से, तो वो हर एक चीज अपनाता है। उसको सिर्फ सीढ़ी चढ़नी है ऊपर, उसको ये नहीं देखना कि दूसरा कहाँ पे खड़ा है। मेनी टाइम्स ये भी होता है कि अगर वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा तो उसको होता है मैं नहीं चढ़ पा रहा तो दूसरा भी ना चढ़े। तो ऐसे करते करते उसको पता है कि लाइफ में ना सक्सेस तभी पाया जा सकता है जब मेरे पास करोड़ ऑफ रुपीज हो। अब उसका टारगेट तो अल्टीमेटली वो करोड़ लाना है ना। उसका टारगेट ये नहीं है कि उसमें किसी को खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या हो रहा है। ये उसका माइंडसेट बन चुका है। बाय हुक और बाय क्रुक ही विल रीच टू दैट पॉइंट। जब उसका बच्चा पैदा होगा, ही वॉज अ बिजनेसमैन, तो वो चाहेगा वो बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डाले जहाँ पे स्कूल में बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे या बेटियां आती हो, कि वो उनसे फ्रेंडशिप करे, उसके कॉन्टैक्ट्स बने। बिकॉज बीइंग अ बिजनेसमैन उसको पता चल चुका है कॉन्टैक्ट्स के साथ ही नेटवर्क बनेगा और वो आगे जाएगा, दूसरे को बिजनेस के बारे में जानेगा। अब वो ट्राई करेगा उस बच्चे में भी वही ट्रेट डालने के, ठीक। अब वो बच्चा बड़ा बनेगा, देयर आर हाई चांसेस कि वो भी वो ऐसा एनपीडी बन जाए। बट नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि उस बच्चे को कैसे रियलाइज होगा। I think the only way is through spirituality, else it is very difficult for that kid to realize कि वो NPD है। One of the circumstances, very far off circumstances is कि धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लग जाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास भी एज ए लाइफ कोच अगर हमारे पास कोई आता है और पता चलता है कि उनके घर में कोई भी NPD है, तो we can just tell them to be away from them. Right. But this is increasing massively. It is increasing massively. There's no solution to it, even in science. Because firstly, it is very difficult for us also as a life coach to detect whether he's an NPD or not. Because NPD is like chameleon. Right. Because So if let's say you bring a person who is an NPD, you have identified it, or some psychologist have told you, he's sitting in front of me, he's so pleasing right now, how can I say he has a problem? Then said, I have to see him, watch him many a time. So what happens is during the conversation with the client, they tell कि यार आज तो फादर बड़े अच्छे थे और फादर अच्छे नहीं थे। तो when we see that pattern, so हम देखते हैं कि हमारे सारे हमने कोर्सेज उसको बता दिए करने के लिए, चुप रहने के लिए, घर शिफ्ट करने के लिए, सब कुछ, और ये बंदा पीछा नहीं छोड़ रहा। So this tells us when all the sciences fail that this person is an NPD. And then the conclusion for the client is that be away from that person as far as possible. And let's say if it's a father, अब दूर तो हो नहीं सकते, घर छोड़ने के लिए हम कहते भी नहीं, because you have to live there. So just either listen to them or don't respond. It is very difficult to tell an NPD person that you are an NPD. Even if an NPD person comes to us, we never tell them that you are an NPD. Mm-hmm. But it's become super common. You see young boys and girls, you're in a party, for example, you're smoking and you have a girlfriend, she doesn't like smoking. You're smoking, you'll smoke up or smoke, and then the moment you see the girl, you'll be like, oh, she's coming, you'll throw. Yes. Right? But maybe when you're sitting with her alone in a room, you're smoking in front of her. But you're creating this image that she is not allowing you to smoke. Right? So there's a alternative world कि आपका one वो कहते हैं mask off. There's a mask in front of people, and in everyone's head that girl must be the worst girl in the world. But actually the problem lies in that person. Yeah. So now this kid who was the kid of that businessman who was very rich was told कि यार दुनिया के सामने अपनी इमेज साफ रखना. Okay. So we know Shah Rukh Khan's kid case, and there are many other actors जिनके बच्चों के साथ ऐसा हो. Eventually क्या हुआ? सलमान खान. Eventually क्या हुआ? So जो भी रिच है या कोई भी पॉलिटिशियन है, होता क्या है? क्या पॉलिटिशियन को ड्रिंक नहीं करता? कभी आपको उसकी मार्च में या कहीं पर ड्रिंक्स दिखती है?
नहीं ना। सो उसको सिखाया ही गया है कि अगर तुमने ऐसा रहना है, वाइफ के सामने अच्छा रहना है, तो पार्टी में थ्रो कर दो, वाइफ हैप्पी, लोगों को भी लगेगा हाँ यार ये बीवी की बात मानता है, तो रूम में आके किंग बन जाओ. बट देन दिस अदर वे अराउंड आल्सो, एंड देयर कुड बी गर्ल्स Yeah, same, any पार्टी में gender. कुछ नहीं कहती, Right. रूम में आके छोड़ती नहीं. Right. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल. बट हाँ, ये एनपीडी डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है. द मोर फास्ट इंस्टाग्राम इज गेटिंग, ये और बढ़ते जा रहा है, ये और बढ़ेगा. बिकॉज यूजुअली ये जो एनपीडीज होते हैं ना, दे आर लूनर्स, दे आर the top 1% people. Okay, I will tell you one instance. Let's say Sasha becomes the number one podcaster of India. अब आपको क्या लगता है? How will you feel? The queen. Queen. And now 1 year has passed. Where will you get the content? The new one. How difficult it will be. Just remember the first day you made a content and today's content. So जब आप top 1 में होते हो ना, let's say I'm Bill Gates or I'm say anyone. अब मैं किसको देख के कॉपी करूं, क्या नया टॉपिक लाऊं, क्या मैं बात करूं? We become loners. We are the best. People come to us. We can't go to anyone to ask. तो उस बीच में दिस गूगल एंड एवरीथिंग, चैट जीपीटी, हम इसमें सर्च करते हैं, इसमें वही आंसर्स मिलते हैं जो आपके लिए प्लीजिंग है. इट्स लाइक कि हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वही रील दिखाना शुरू कर देता है. Algorithm. तो उस एल्गोरिथम में जाते हैं, उस एल्गोरिथम में जाते जाते वो उसमें और सेन होते जाते हैं. एंड देयर इज नो कमिंग आउट, क्योंकि वो एल्गोरिथम है, प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं हो रहा. तो वो एल्गोरिथम से हम इतने फार रीच कर जाते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेज दैट कम्स इज हाइपर एक्सटेंसिव ब्रेन. ब्रेन इतना फास्ट हो जाता है, जस्ट इमेजिन कि एक जनरेटर एक बल्ब को लाइट दे रहा है एंड पूरे जनरेटर की लाइट एक बल्ब को जा रही है, तो वो फट जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर क्लाइंट्स विद मी एज वेल, जिनको डिफरेंट वन सच प्रॉब्लम व्हिच इज वेरी मच अकरिंग इज स्टैमरिंग. Okay. Yeah. Because of this. That the brain has become so fast, the person has so much to speak to. Yeah. The energies. But there is no synchronization. हमारा माउथ की स्पेस उतनी है, टंग की स्पीड उतनी है, हमारा ब्रेन इतना फास्ट चल रहा है, तो अल्टीमेटली आप ABCD बोलना चाहते हो, बट यू स्टार्ट सेइंग ADJZ. It becomes a problem. So then we enter into spirituality. हम बैलेंस लाते हैं लाइफ में, उसको हम काम डाउन करते हैं. सो बैलेंस चाहिए बोलने का. तो एनपीडी के केसेस इसीलिए भी बढ़ रहे हैं कि नाउ हमें सीख करने के लिए डॉक्टर नहीं चाहिए. वी हैव चैट जीपीटी. एम आई डूइंग राइट? सो यू इफ यू हैव यूज्ड एवर, वो बोलेगा जो आपको चाहिए, वो वैलिडेट करेगा. अगर वो इनवैलिडेट करते हैं और आप बोलते हो वैलिडेट करो, वैलिडेट करेगा. But don't you think it's a good thing? Suppose I am angry and someone validates me, I'll become calmer rather than giving me advice that time. सी वही बात है ना, सिचुएशनल है ना. If Sasha comes to me and tells me कि यार मैंने किसी को ना पत्थर मारा और उसका सर फट गया, I would immediately say, Sasha, ये क्या किया तुमने? Are you mad? But now Sasha tells me कि मैंने किसी को पत्थर मारा, उसका सर फट गया, वो किसी के ऊपर गन रख के खड़ा था. My answer will be totally different. So उस इंसान के जो भी गुण है, गुण में प्रॉब्लम नहीं है, किस सिचुएशन में वो गुण अप्लाई हुआ वो प्रॉब्लम है. So we are talking about NPD when we don't have anyone in our room. So the conversation is very good. But let's say if we have an NPD in our room, and let's say I tell you are an NPD, what will happen? So जो हमारे टॉपिक्स के जो भी आंसर्स हैं, ये बड़ी ज़्यादा सिचुएशनल है. And when we use that chat GPT, we are not telling that person the situation. I'm just telling, I went to a podcast and Sasha asked me this question, whether I said right or wrong. What do you expect out of ChatGPT? वो तो आप ही को, you'll tell your version of the story. So in the world where हमारे थॉट्स ही नेगेटिव रहते हैं, ChatGPT के अंदर जिसने भी एल्गोरिथम डाला उसने पॉजिटिव डाला. Yeah, that is true. तो उसने इसी चीज को प्ले अराउंड की. आपने एल्गोरिथम की बात की. So जैसे हमारा रील्स का एल्गोरिथम होता है कि हम अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो नेगेटिव रील आएगी. Don't you think it's messing up with people's brain and also their relationship? Because if I'm going through a negative emotion and that मेरी relationship में वो चीज़ हो रही है, तो मैं वो देखूंगी and then I'll tell my partner, oh, I watched this, you are exactly very like much this. true.
Very much true. I wouldn't say the person, but I get so many Insta reels and so many Insta messages, and it takes me, weeks to open them up. So there are people who come to me, they open their reels, see my reels, this is there. So one of the reasons I don't see those reels is that those are very situational. If, let's say, if my wife is sending me some reel and she was not happy today, she was, burdened, she did something else, of course, let's say she was listening to a bhajan and किसी god का reel आ गया, and today is that day when I lost a deal and मैं भगवान को ही कोस रहा था, सो मैं कैसे हम दोनों सेम पैटर्न पे जाएंगे? तो एल्गोरिदम तो बहुत ज़्यादा मैसअप कर रहा है, क्योंकि जिस दिन मैं वो डील भी लूज करूंगा, मैं खुलूंगा, बोलेगा यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट दैट वाज वन काइंड ऑफ अ डील इन माय लाइफ टाइम, चिंता वाली बात तो है। तो अब अगर मैं उस एल्गोरिथम को पकड़ लूं कि चिंता वाली बात नहीं है, तो देयर इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर डील इन माय लाइफ। Suppose I have liked something negative when I was feeling an emotion 2 months back, and that person sees today. Now people take screenshots of that and then they'll send it to other people ki, oh shit, she's going through a breakup. The best is I call them vela. I call them vela. Yeah. People who don't really have it. See, I'm not judging. But people go, see, maybe they are vela, but imagine the kind of anxiety they are making the person go through during that time. You must not be doing it intentionally. But then you opened your life to them, no? बट लाइक तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं तो कुछ भी लाइक करती हूँ। आई लाइक इवन वो क्लोथिंग की एड होगी वो भी लाइक कर देती हूँ। बड़ा सिचुएशनल है ना। इट्स फॉर मी इट इज लाइक दैट टॉपिक, जब एक लड़की छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही है और आप कह रहे हो कि ये वो गलत है, फॉर मी इट्स दैट, ठीक है ना। अब एक उसमें मेरी थिंकिंग आती है कि यार गलत है बिकॉज वो पहन के जा रही है तो कोई लड़का देखेगा। देन अगेन देयर आर 5 अदर स्टेटमेंट्स, अ गर्ल वुड डिफर एंड मी डिफर। अब एक लड़की इमोशनल थी, वो अपना टाइम पास कर रही थी, उसने वो लाइक कर दिया। उसने लाइक क्यों किया? Because she was feeling that emotion. Feeling that emotion. Either she liked that reel actually, और वो थैंक्स बोलना चाहती थी उस बंदे को कि वो फेमस हो। Either she liked कि ऐसी और वीडियोस उसके पास है, she would come out. गलती से भी टच हो सकता है। अब this other person is vela. He's kind of that NPD, and NPD is not 100% NPD always. There could be some people who are very good in their life, but they're NPD in business. That also happens. You meet someone, he's very good with life, because उसके जो फादर थे वो घर पे बहुत अच्छे थे, बट उसके फादर से उसने बिजनेस नहीं सीखा बिकॉज उसके फादर ने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं किया था। बट जब वो बिजनेस में गए, उसने देखा बिजनेस तो तभी चलता है जब दूसरे की प्लेट से छीनो, तो वो बिजनेस में एनपीडी बन गए। बट घर उसका सही चला रहे थे पापा, उसने भी सही चलाया, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। सो अब ये जो बंदा, इसके फादर ने बिजनेस छीना या जिसका घर सही नहीं चल रहा, जो वेला है, जिसके पास काम नहीं है, उसके पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने का, स्क्रीनशॉट खींचा दूसरे को डाल दिया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट, have you been to countries like Europe? When you walk around the road now, you won't find a single person जो आपको greet ना करे। They will greet you good morning, good afternoon. Someone would say, how's your day going? And just imagine in India जब हम मिलते हैं, यार तू तो पतला हो गया। वो आपकी बेटी की शादी हो गई थी ना? अच्छा 2 साल हो गए, बच्चा हो गया। The kind of topics we have, हमारे आसपास जो भी लोग हैं ना, they don't have topics to talk about. How is life? एक हम जो नई जनरेशन आ रहे हैं, हम एक ही बोल देते हैं यार व्हाट्सएप। I think till date मेरे पास आंसर नहीं है व्हाट्सएप। I just say all good. I don't know व्हाट्सएप का मैं क्या आंसर करूँ। जो आप करंटली कर रहे हो वो बताओ कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या। करंटली तो मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। If you tell me Shivanshu व्हाट्सएप, ऐसे I'm talking to you. So see, मतलब कम्युनिकेशन का डिफरेंस देख रहे हो। सो वही चीज है, उन्होंने डाला, अगले के पास टाइम था, he was free, उसने उसका और मजा उड़ाया। there was no compassion, there was no empathy, उसकी कुर्सी पे नहीं आ रहा था गलती, उसको कॉल नहीं किया। many times I have seen कि इनफैक्ट माय वाइफ, कि किसी ने अगर कुछ लाइक किया है एंड दिख जाता है ना कि who follows it, तो I have seen her calling to that friend, यार तुमने इसको फॉलो क्यों किया है? And many times she have ended up कि वो unfollow कर दे, या तो ये she would have started following, because there must be something good in that. अब वो वाली दुनिया है इंस्टा वाली। अब इंस्टा वाली दुनिया को हम नेचुरल दुनिया में नहीं ला सकते। तो ये जो कर रहे हैं उनको उस चीज में मजा आ रहा है, बिकॉज कल जब उन्होंने मीटिंग पे जाना है, किटी में जाना है, दे डोंट हैव अ टॉपिक। एज ए लाइफ कोच, मैं अगर किसी भी मीटिंग में जाता हूँ, मेरे पास बहुत टॉपिक है,
मैं बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट हूँ, मैं हर एक का बिजनेस जानना चाहता हूँ, छोटे से लेके बड़ा। इवन आई वुड लव टू अंडरस्टैंड हाउ द पॉडकास्ट इंडस्ट्री वर्क्स। रीजन क्योंकि यार दिस सो मच टू लर्न। आपके बिजनेस में भी आपका कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी जिसके बारे में मुझे पता चलेगा, तो मेरा जो एम्पायर खड़ा है या जो भी बिजनेस है वो वहाँ पे शायद अप्लाई हो जाए। एंड यू नेवर गेट टू नो कि वो 1 करोड़ का आंसर हो। या आप जैसे पॉडकास्ट बना रहे हो, आई रिमेम्बर यू ब्रॉट अप दिस स्किन स्पेशलिस्ट पल की। सो उन्होंने कुछ तो मेन ग्रूमिंग का बताया। फॉर मी दैट वाज अ 1 लाख रुपी थिंग कि उन्होंने डाला, मैंने उसको अच्छे से ले लिया। उसमें सनस्क्रीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस बताया था। आई स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन। फॉर मी दैट वाज अ वेस्टेज ऑफ मनी टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बट वैसे ही कोई और भी शिवांशु इस दुनिया में होगा। कितनी बेकार की बातें हैं, 100 रुपए की क्रीम आती है, 1000 रुपए वाली लगा रहे हैं। सो देर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल। अब मेरे जैसे इंसान ने उसको पकड़ लिया। आई हैड माई वाइफ अराउंड who told me no, she's not bullshitting about it, but that guy might have a woman around him जो हामी भर देती है। तो कहते हैं ना संगति, उसकी संगति वैसी थी, उसने हामी भर दी, उसने कर दिया। उन्हें स्क्रीनशॉट लेके एक फ्रेंड को डाला, जिसने बोला वाह ये हो रहा है, चल फैलाते हैं। वैसे ही वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे डालता, बोलता है तो क्या कर रहा है, बताइए लड़की कहाँ पे, लेट्स मीट हर एंड सी। तो वो जिस संगति में रह रहा है ये उसकी दुनिया में चल रही है। जो आपकी दुनिया है, आपकी दुनिया में अगर मैं साइशा की बात करूँ 10 में से 1 जना होगा, बट देन दैट पर्सन इज देयर क्योंकि उसको आपने निकालना है, आप उसको ऐड करोगे। So, of course, 90% of the people in this world are currently going negative. Probably the reason is Insta. हमारी thinking नहीं है, Insta की thinking चल रही है। We are the product now. ये मेरे को किसी ने statement बताई थी that if something is free, you are the product. So we have become the product. It is not our will. कपड़े लेने जाओ, there are huge discount. Have you ever imagined कि जो हम शर्ट डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं हमें चाहिए भी थी? So जो वो बंदा शेयर कर रहा है, he doesn't have a life or his surroundings is not good. So if someone like that is, let's say, watching it and doing it, so they know where they are right now. Makes sense. We want to talk about boys are very logical in thinking and girls are emotional. Yeah. So, what is the mindset and how can a boy understand a girl or a girl understand a boy? For a boy, the boy has to become a very good listener, which is very difficult. Because let's say Sasha is telling me something and it has 10 statements. The moment one statement ends, my brain is like, what is the answer? It's cause and effect. Boys work on cause and effect. Sasha tells यार मेरे को ना सर दर्द हो रहा है, अच्छा क्या हुआ? And same Shivanshu कहते Sasha मुझे सर दर्द हो रहा है, okay let's go around and walk. See the difference. So जो girls का like I said it's round, they're more emotional. तो भगवान के द्वारा बनाए ही वैसे गए हैं, हमारी सोसाइटी भी वैसे है कि डाउन द लाइन हमने पोर्ट्रेट भी वैसे ही किया है। एंड अगर हम प्रीवियस ईयर्स देखें तो जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है, सिंस दे वर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, दे वर केप्ट एट होम बिकॉज एक घर में बहुत सारे लोगों ने आना था और उसको अच्छे से चैनलाइज एक लेडी ही कर सकती थी। एंड सिंस प्रॉब्लम फास्टर डिसीजन, cause and effect relationship, problem solving was there in the guy, ठीक है, तो उसको ऑफिस भेजा जाता था कि जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करो, या कहीं पे भी जाओ, फॉर दैट मैटर अर्ली मैंस में किलिंग के लिए जाते थे हम, तो उनको भेजा जाता था। एल्स इट इज कंसिडर्ड दैट एवरीवन इज अ बॉय एंड अ पर्सन हु इज अ 80% बॉय इज अ गर्ल एंड वो 20% एक्स्ट्रा इन दैट। अगर आपको क्रोमोसोम को भी एनालॉजी पता होगा तो एक स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। तो हर एक लड़के में एक लड़की है और हर एक लड़की में भी एक लड़का है। ये तो साइंस ने ही हमें बताया एंड दिस इज वेरी मच ट्रू। So that is the emotional intelligent part. That is the emotional intelligence. Girls are very emotional intelligent. अगर मैं आज साइशा को बोलूं, let's say there are 10 people are going to come, you will go and find out, you will involve them. Girls की ये tendency है, they will involve people. Like let's say I talk about my wife. I will come to home, she will, how was your day? It was very good. She will not ask me कि अच्छा कितने पैसे कमाए. And let's say my wife goes out to work. She comes. My go-to question is आज कितने कमाए? So हमें बनाया ही वैसा गया, अर्ली मैंस के टाइम से चलता आ रहा है, हमारा कल्चर भी वैसा। But how do you change that ideology? I think that's not in my hand,
कुछ नेचुरल आपको बॉडी दिया, बीइंग अ गर्ल, ऑफ कोर्स आपके अंदर नहीं, मस्कुलर बट पावर कम है. आप उसको लॉजिकली, अगर आपकी वाइफ काम पे जाती है एंड द वे यू सेड दैट आप पूछते पे, सो यू कैन चेंज योर आइडियोलॉजी टुवर्ड्स हर, राइट? Hey, I can change my ideology towards her. I think step by step होता है. Let's say if I'm very rigid that my wife can't go to work, so the first step would be कि यार she will be busy. मैं उसको नहीं बता रहा, अपने माइंड में तो कह सकता हूँ ना कि being घर में monotonous रहेगा, कुछ करने को नहीं है, बोर होगा, दिमाग नहीं बढ़ेगा, तो she is going out and being busy is the first point that I can tell myself. Secondly, yeah, she has studied so much, she has so much skills, इस दुनिया में contribute करने आए हैं, करेंगी ना. Thirdly, यार मैं घर पे आता हूँ, I have my own negativity which I bring in, and वो घर पे रहती है, मेरे में हिम्मत तो होती नहीं बात करने की, ज़्यादा थका होता हूँ, तो वो भी बाहर जाएगी, थक के आएगी, बात ही नहीं करनी पड़ेगी. There are so many points that we can bring in, and आई थिंक आज के कल्चर में ऐसा नहीं है कि एक लड़की को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम लड़की हो और घर पे रह के काम करो. फ्रॉम द सराउंडिंग्स वेयर आई कम, आई डोंट थिंक सो इट इज. इट कुड बी दैट कि बीइंग मैरिड, ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉइंट ऑलवेज कि कभी ना कभी तो बच्चा होगा. एंड अगेन, लड़कियां इमोशनली कनेक्ट करती है और लड़के तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं. बच्चा रो रहा होगा, लड़का बोलेगा या तो चुप कर या तो प्रॉब्लम बता, वो लड़की उसके साथ बैठी रहेगी. तो हाँ, ऐसी एक्सपेक्टेशन जरूर है सोसाइटी में कि यार बच्चा जब होगा तो आपने संभालना है, ट्राई करो इस चीज को. कोई लड़के को आता ही नहीं है, या तो लड़के को ट्रेनिंग. जस्ट इमेजिन योर ब्रदर और योर फादर गोइंग टू अ कोचिंग क्लास कि बच्चे को कैसे संभाला जाए. But that should be naturally done, no? Because अब आप अब्रॉड की बात देखो, उनके टाइमिंग्स होते हैं कि सुबह मम्मी देख रही है तो रात को पापा देखेंगे. So the responsibility is divided equally. That is what I said, communication. So let's say if I have a baby and मेरी wife को ये problem, she should communicate. When you see I am not able to do it, let's do one thing. कि since you sleep early, I will take care of the kid towards the night. सुबह से तुम्हारी ड्यूटी. कम्युनिकेशन होगी तब ना. एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू आल्सो एड्रेस इट. हाँ यार, यू आर वेरी मच राइट कि मुझे ऑफिस जाना है एंड आप रात का कर लो, सुबह मुझे ऑफिस जाना है. तो सुबह सुबह जब मैंने 10 बजे जाना, उससे पहले मैंने, आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स. आई थिंक ये अच्छी चीज़ है ना, न्यूज़ में आती नहीं है ना, रील्स पे आती है. मैंने बहुत सारे मेरे अराउंड ऐसे पेरेंट्स है, इनफैक्ट माई ब्रदर इज वन, जो सुबह उठते हैं, बच्चों को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या जिमिंग एंड ऑल करते हैं, बच्चों को पिकअप करते हैं, देन दे गो टू ऑफिस. इट्स अ वेरी कॉमन. आई थिंक 90% ऑफ द पीपल आर डूइंग इट. बट वही बात है, आज हो रहा है, रील्स में आने में टाइम लगेगा, एंड रील्स भी हमारे मोबाइल पे वही चलती है जो हम देखना चाहते हैं. तो कितने लोग हैं जो ये रील में देख के खुश होंगे? 10% तो पॉजिटिव लोग हैं, तो 10% ही पॉजिटिव लोग रील्स देखना चाहेंगे. बट रील्स वाले जो कंटेंट बना रहे हैं वो तो 90% के लिए बनाएंगे ना. There are people who are revengeful as partners. आपने मेरे साथ गलत किए, मैं आपके साथ गलत करूँगी. How to deal with such a person? Firstly, I would say every partner is like that. There comes a point they are like, किसने ऐसा किया था, I will do it. We're normal humans. That's a tendency which can happen. See, me and my wife are sitting somewhere and my wife said something कि Shivanshu, let's take example of someone else, okay? Two couples are sitting and wife just said, yeah, my husband is really good. He wakes up early and goes for football and everything. But yeah, he doesn't sleep with me in the morning. वैसा. The guy would say कि यार इसने सबके सामने क्यों बोल दिया? तुम्हें पता है कि दुनिया में जल्दी उठना, लोग बोलते हैं कि यार ये जल्दी उठता है, ये बड़ा धार्मिक है, वैसा. सो अब मैं बताऊंगा इसकी, मैं भी इसकी एक चीज किसी को बोलूँ, यार ये तो सोती रहती है. सो आई थिंक लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, ये पैरामीटर्स आ जाते हैं कि आई विल टेक अ रिवेंज. लेना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे होते हैं ऐसे, मोस्टली आती है. दिस इज लाइक नेगेटिव वही चैनलाइजेशन. जब मेरे पास भी ऐसा कोई कपल आता है तो बोलते हैं उसने कह दिया, उसको समझाओ. But I feel that if you love someone, how can you be revengeful towards them? दिस इज नॉट रिवेंज एग्जैक्टली. आपकी वो जो स्टोरी थी, that was very different. But in general, I'm asking that if you love someone, how can you be revengeful towards that? I love someone, but for a moment of time I was not loving. That love emotion got suppressed क्योंकि मेरा बाकी बॉडी मुझ पे हावी हो गई थी. समथिंग हैपेंड
something triggered my mind, some trauma from my, let's say, past life, which we say, or earlier life, like 1 year of age, 2 years of age. I was fat all my life. There was this teacher who told me, Shivanya, once there was going to be a dance show, and she said, you cannot dance. Until my 12th class, or when जब तक मैं fit नहीं हुआ, तो she was, always there in my mind. Whenever anyone wanted me to dance, I never went to the floor. Never. It's only one day when I became a life coach, somehow she called me up and she asked me, Shivanshu, how can I get done with this course? So I told her, I have done this. You can go to that person and you can get with this degree. But एक satisfaction मिली आपको? Yes. Because that person came. That day I kept quiet after very long. I was married. Even my wife was worried, what is happening? It's been so long. Shivanshu is in that position that he is sitting. In fact, see, मेरी voice भी इस वक्त वो हो रही है. But उन्होंने तो अपनी ओर से उस टाइम पे राइट ही कहा था ना, you don't come for dance. तुम मोटे हो, तुम उतना अच्छा डांस बाकी ग्रुप के साथ नहीं कर पाओगे. एक तरीके से would have been her thinking कि जो स्कूल का शो था वो अच्छा नहीं दिखेगा. This was just that. Coming back to the example, जब उस कपल को लड़की ने बोला, तो वो क्या कर रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ मिलाने के लिए कमेंट पास कर रही थी. What a boy can and a girl should do is कि please don't do like this, मुझे ये बुरा लगा. तो then the girl can explain कि अरे मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ तो मस्ती चलती है ना, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगी तो कैसे जलब कैसे होगा. वो भी तो बोलेंगे ना कि यार तू तो खाली अपने हस्बैंड के साथ चिपकी रहती है. अगर ये कम्युनिकेशन हो जाती है तो ये चीज नहीं आएगा. अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होती तो उस टाइम के लिए लव थोड़ा कम हुआ है, हटा नहीं है. देयर माइट बी सर्टेन मोमेंट्स जब आपको अपने पापा पे गुस्सा आया होगा. अगर आप पापा से प्यार करते हो तो गुस्सा क्यों आया? No, I understand. Gussa is of course that emotion is fine. That is totally okay. जहाँ पे good है वहाँ पे bad होगा, जहाँ पे positive है वहाँ पे negative होगा. But I'm saying the thought of being revengeful is more than गुस्सा. आज मैंने वो चीज सप्रेस की. लव, देखो लव का ही सिनोनिमस वर्ड है हेट्रेड. अगर हेट्रेड होगा तो लव नहीं होगा, लव होगा तो हेट्रेड नहीं होगा. जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे अंदर हेट्रेड आया, मैंने लव से उसको ओवरकम किया. सो मीन्स आई सप्रेस इट. बट अगर मैंने बात की तो मैंने सप्रेस नहीं किया. आई वाज विद द फ्लो. ऐसा मैंने बहुत बारी कर दिया. सो वो हेट्रेड एक बॉल में कन्वर्ट हो चुका है. तो ये अंदर से एक नेचुरल फिनोमिनन है कि वो बॉल पूरी निकल के आए. अगर आपको किसी पे गुस्से वो निकल के आएगा. कहते हैं ना, जब नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी में हम जाए या मेडिटेशंस में जाए, फॉरगिव द पर्सन, दैट इज द बेस्ट थिंग. That's what I said, that अगर आप revengeful होगे, how will you learn the art of letting go? Whenever you take a revenge from someone, karmic account, it comes back to you. आज नहीं तो कल, you will go to that zone. You will go to the spirituality or some healer or psychologist or a life coach, or see some video. You will get healed. You will get to know what was wrong that you have done. अब जो हिटलर थे वो तो चले गए, बट वो जब चले गए तब तक उन्होंने कोई प्रॉब्लम देखी नहीं. बट इफ ही वुड हैव सर्वाइव्ड, उनके अपने बच्चे या फैमिली होती और उनको कोई परेशानी आती, तो ही वुड सर्च फॉर इट कि व्हाट रॉन्ग ही हैड डन. तो ये जो आज अटैक कर रहा है इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा. ही विल अटैक, बट आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, मे बी इन द नेक्स्ट रिलेशनशिप से आफ्टर द डिवोर्स. कितने हम ये बात कर रहे हैं कि कितने लोगों ने डिवोर्स दिया तो फिर से मिल भी गए, बिकॉज उनको मोमेंट मिला. वो दूर हुए उस इंसान से, उन्होंने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया और फाइंड आउट किया कि नहीं, शी वाज राइट. बैठे बैठे एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वी जस्ट थिंक नेगेटिव. If somebody wants to move on from a relationship, what are the 5 tips that you'd like to give them? The first and the foremost one is connect to nature. Nature is something you can't judge. You don't have a judgment for. वो backfire नहीं करती. अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, you don't know कि वो सही है तुम्हारे लिए या गलत. But the first one is nature. Let's say you're going to a park, walking on a street. जो वहाँ पर एक नेचुरल डॉग है, क्या बैकफायर करेगा? You're not talking to that dog. You're just walking. You're living you're introspecting what has happened. And during that point of time, let the emotions come and go. Do not judge yourself. Don't catch them. तो नेचर सबसे बेस्ट कही गई है.
And the second one is talk to a human. Definitely talk to a human or a friend first. And if it's a girl, it should be a girl, not a guy. Because Talk to the same gender. talk to the same gender. And the third one would be a life coach or a psychologist. But मैं second में थोड़ा सा elaborate करना चाहूँगा. Why a girl? Because see, when there was a masculine power and a feminine power, you were living a very good life. Now suddenly the masculine power has gone. And अगर आप एक लड़के से connect कर रहे हो, who is a friend, not a brother, there are high chances you guys will connect and you don't know. Yes, that were you meant to be. Negative and positive will attract. So that there is a masculine power and you are a feminine power. आप दोनों connect हो जाओगे. And then again that will be a problem. But when you are talking to a girl, you are the same powers. You are not going to get connected. Third, there are many people. आप friends से नहीं बात कर पाए. हमारी society की सबसे बड़ी चीज़ है यार. मम्मा को बताऊंगी जज करेंगे, पापा को हम बता भी नहीं सकते मम्मा पापा को. देयर आर वेरी लेस. you are lucky, for that case. Hardly there are parents. I would say 100 में एक पेरेंट है जिनसे जाके बच्चे बात कर सकते हैं एंड वो आंसर देंगे. दे कैन शेयर कि यार आई हैव अ बॉयफ्रेंड. अगर कोई भी सुन रहा है जिसके पास, दे आर वेरी लकी. ठीक है. तो जो ऐसे नहीं कर सकते, दे शुड सीक अ साइकोलॉजिस्ट और अ लाइफ कोच. एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो लाइफ कोच एंड ऑल तो बहुत बाद में आए थे. पहले न्यूज़पेपर में चीजें आनी शुरू हो गई थी थोड़ी एडल्ट्री वाली. इफ यू नीड अ फ्रेंड कॉल मी. व्हाट वाज दैट? हम उसको एडल्ट्री तो कह देते हैं, बट यू जस्ट वांटेड समवन टू स्पीक टू बिकॉज द आंसर लाइज विद इन यू. यू नो कि उसके अंदर क्या गलत था, तुम कहाँ पे गलत थे, वर यू पॉसेसिव और नॉट. सो आज के टाइम पे इट्स इजीली अवेलेबल विद द नेम ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और डिफरेंट डॉक्टर्स और साइकोलॉजी, एंड यू आर रेडी टू पे आल्सो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर नॉट रेडी टू पे फॉर इट. ठीक है ना? So if you can't go to anyone, or you are a very influential person and you are very famous on Insta, let's say you have a lakh and lakh followers, you can't talk to everyone. Go to a professional, talk to them. I was just coming to that. There are a lot of people when they go through a breakup, they leave their basic necessity, food, sleep, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते. They can't get up out of the bed. तो get out of the bed जो simple चीजें होती हैं. What do you do at this time? See, at this time, usually these people can't do much. There has to be someone else who comes in their life and tell you need this, you need that. या तो कोई फ्रेंड इनको अप्रोच करता है, बात करता है क्या हुआ. यूजुअली पेरेंट्स होने चाहिए, बेटा क्या हुआ हमसे बात करो. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली विद देम. नॉट टू फ्रेंडली बट अ लिटिल फ्रेंडली दैट दे कैन ओपन अप. Whenever a person is in depression, वो खुद से नहीं बाहर आ सकता. There has to be someone else who has to bring. If they're in anxiety or stress, they can. But if they're in depression, it is that state of mind kind of similar to the NPD that you don't know you are an NPD. So you know you are weak, you know there's something bad, but you don't know how to come out of it. So depression में mind नहीं चल रहा. It's just that physical body activity कम है और brain बहुत ज़्यादा fast. Brain 100 units आ गया, physical body 10 पे. आपको पता है कि आप डिप्रेशन में तो हो, बट बॉडी मूव ही नहीं कर रही, कहाँ पे जाओ. तो समवन हैज टू ब्रिंग देम इन. जरूरी नहीं है कि लाइफ कोच के पास लेके जाना है या किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना है. जस्ट इन्वॉल्व देम समवेयर. पार्टी पे इन्वॉल्व कर लो, डांस करवा लो. बिकॉज द मोमेंट या उनको भगा लो जिम में, कहीं पे भी भगा लो फॉर दैट मैटर, द मोमेंट उनकी अवेयरनेस प्रेजेंट में आएगी, वो थॉट ब्रेक होगा. देयर कुड बी चांस बाय गॉड ग्रेस कि वो थॉट अवे हो ही जाए उस टाइम के लिए. सो फिर उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी. व्हेन यू आर नॉर्मल, जब वो ब्रेकअप नहीं हुआ था, वो वाला पीरियड आ जाएगा तो तुम सोच पाओगे यार मैं पागल हूँ, आज डेट ये है, इट्स बीन 5 days मैंने वेस्ट कर दिए. यू विल स्टार्ट टेकिंग अप सम एक्शन. फर्स्ट स्टेप, दैट्स इट. वो खुद भी ले सकते हैं, खुद नहीं ले सकते तो कोई करवाए. राइट. अभी तक हमने बात की फ्रॉम लव टू ब्रेकअप. नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस आफ्टर ब्रेकअप. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वंस suppose somebody has broken up and they see a shift in that person, their loved one, their partner's behavior. अभी तक बहुत प्यार था, एकदम से वो बंदा कोल्ड हो गया. So you have it in your head, did I know, like do I know this person, was this person always like this? How do you get rid of those questions? Firstly, this is the point wherein you find out that whether that person is an NPD or not. Okay. How do you find that out? From This is the first initiation.
So if a person comes to me and tells me this is happening, my person was a god and everything was this and इतना अच्छा था, सब कुछ करता था, and suddenly उसके एक मुझको पार्ट पता चली जो मुझे पता नहीं थी. This is that moment. Start searching whether he's an NPD or not. This means so far he could have been just pleasing you. That cigarette वाला thing, कि वो सिगरेट तो पी रहा था बट तुम आते थे तो वो फेंक देता था. इस बार ही तुमने देख भी लिया. So he was always like that. He was always like The that. cold person. But he just portrayed in the society that I am not this. कितने बच्चे ऐसे होते हैं? They are, आज के टाइम पे I think drinking is allowed at home. Parents are educated. They tell them कि यार तुम घर में हमारे पास बैठ के पी. But still smoking is not considered good. Okay? So बच्चे पीते तो हैं. उनके फादर्स भी पीते हैं. बच्चों को भी पता होता है. बट सारी हमारी जो मदर्स हैं या किसी की भी जो लेडीज है वो नजरअंदाज करती है ना. स्मेल भी आ रही होती है जब वो रूम में आते हैं. दिस इज दैट फेज कि व्हेन दिस इज हैपनिंग स्टार्ट सर्चिंग योरसेल्फ. नाउ इट इज नॉट बैड टू सर्च. थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना अपने माइंड के लिए. शायद दिस इज नॉट बैड. यू आर थोड़ा सा अपने अंदर इनसिक्योरिटी ला रहे हो टू फाइंड आउट गुड अबाउट द पर्सन कि मेरे साथ प्ले अराउंड तो नहीं हो रहा. एंड अगर एक और कोई पॉइंट मिलता है सो देयर आर चांसेस दैट पर्सन इज एन एनपीडी. इधर एन एनपीडी और वही कि उसको पता नहीं, उसको सिखाया गया कि सोसाइटी में डिफरेंट बिहेव करना. What if the person is emotional? तो आपने switch off कर दिया, वो तो पागल हो रहा है. So what do you do in that situation? See, if she is emotional, she can just, you know, for this matter, देखो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि कपल बोर हो चुके हैं. What happens is when we, you know, connect to a person, there's a dopamine that gets released. There are many other, you know, hormones that gets released. बार बार same. Let's say a guy have given you one rose, and वो 365 दिन आपको रोज दे रहा है. Will you get bored? No, that I totally understand. Dopamine level अब आपको एक रोज पे नहीं मिला है. Now you need 2 roses. This is the same thing. ठीक है. एक कपल इकट्ठे थे. They have done anything and everything with each other. Their physical emotions were fulfilled. घूमना था, सोसाइटी स्टेटस पूरा हो गया, सब कुछ हो गया. Now nothing is left. For let's say cities like Jammu, let's say we have 50 restaurants, we have been to all of them. We have theaters, we have been to all of them. We have cafes, सारी जगह चले गए. मंदिर भी हो गया, स्पिरिचुअल भी हो गया, सब कुछ हो गया. अब लेकर कहाँ जाएं? ठीक है. बातें भी लिमिटेड है, कितनी करें. उसमें भी हमारा सिलेक्टिव नेचर है. मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद. अब इंसान भी मेरा अपना हो गया है तो मैं उस पर चला भी सकता हूँ. Now nothing is left. Me and Sasha are together in a podcast for 1 year. Is there a topic to speak? But now Sasha tells me कि yeah, you go, come after 6 months. There'll be a lot of topics. तो ऐसा बहुत बारी होता है because they liked each other as a person, but they were so fast with their relationship that everything was lost. So you know, if a person gets married, he should be balanced. एक ही दिन. और काफी बारी ना तुम्हारे पेरेंट्स भी टीच करते हैं. यस, एक बड़ी ना इंडियन गर्ल लाइन है, मतलब गर्ल्स के लिए लाइन होती है यार, उसको पहले ही मत दिखा देना कि क्या क्या है. ऐसा सुना. दिस इज दैट. थोड़ा 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 करके देखो तो मजा आएगा. इफ you know start earning, you buy an alto, then only you get to know what is a Santro, then only you get to know what is a Safari, then only you get to know what is a Fortuner, and then only you get to know, you know, Mercedes, BMW and Rolls Royce. Let's say a person directly got a Rolls Royce, but next. तब ये जो कपल है ये इसीलिए ब्रेकअप कर रहे हैं बिकॉज नथिंग लेफ्ट. तो उनको मजा नहीं आ रहा, डोपामिन नहीं बढ़ रहा. डोपामिन के अलग अलग वेज होते हैं. वन ऑफ देम इज बीइंग फिजिकल एज वेल. तो वो कहीं और से बढ़ेगा नए से. एंड वो जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे तो शादी के टाइम पे मंजिल में, उसको तो हम करते ही नहीं फॉलो. सो कुछ तो ग्राउंड रूल होना चाहिए. अगर वो ग्राउंड रूल होगा तो ही चल पाओगे. तो आप कम्युनिकेट करोगे अपनी वाइफ से या कपल से, यार वी आर गेटिंग बोर्ड, लेट्स टेक 7 days ऑफ. बैठे हैं, सब कुछ है, लेट्स नॉट टॉक टू ईच अदर. खुद ही सब कुछ कनेक्ट होगा. कितने हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना जो हमसे फार ऑफ होते हैं, और जब उनसे एक बात होती है वो हमारे जिगरी फ्रेंड्स से भी अच्छे होते हैं. दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग. बट जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है उससे भी हमें सबसे ज्यादा सुनाता है. बट उस मोमेंट पे वो बंदा जब जम्मू आपसे मिलने आ रहा है, आप बेस्ट फ्रेंड को याद भी नहीं करते. आप उसी के साथ होते हैं क्योंकि उसने एक दिन में चल जाना है. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड बॉन्डिंग. घर वालों से ज्यादा लड़ाई होती है बाहर वालों से कम. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much. I also like talking to you.
like, share subscribe to Dopamine High. Thank you.